फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and in 2008 the face of Indian cricket totally changed when Indian Premier League was introduced and it was RCB versus KKR who played against each other in the first match with Brendan McCullum took on the RCB bowlers and struck the first 100 of the Indian Premier League in that particular game as well. Cut to 2024, we are here again gearing up for another RCB versus KKR match. वहां से यहां तक बहुत कुछ बदला है, कैप्टन्स बदले हैं, ट्रॉफी टैली बदली है, राइवलरी के रीजंस बदले हैं. To talk all about this rather, I have with me Jamie Alter, K. Srinivas Rao, and will be shortly joined by Taus Rizvi. Srini, I'll start with you first. हम राइवलरी कहते हैं इन दोनों टीम्स की के बारे में. राइवलरी कह सकते हैं, 2 ट्रॉफीज हैं और 0 है. 2 ट्रॉफी, सॉरी, कम अगेन. केकेआर के पास 2 ट्रॉफीज हैं और आरसीबी के पास 0 है. बट वी कॉल दिस अ राइवलरी. किस चीज की राइवलरी है बताओ. मतलब मुझे समझता है, लेकिन ये राइवलरी इसीलिए है क्योंकि दिस वाज द ओपनिंग मैच ऑफ आईपीएल. यू नो, इफ आई हैव टू पुट समथिंग इन पर्सपेक्टिव हियर, दिस इज द ओपनिंग मैच ऑफ द आईपीएल व्हिच यू गॉट टू गिव इट टू केकेआर. सेट शाहरुख खान and Brendan McCullum just put things in perspective. Yeah. I will never forget that evening. I didn't know, none of us knew what to expect. That 158, I mean, you know, IPL will always owe that love to Brendan McCullum. So from that perspective, that's right. Otherwise, क्या rivalry है? अभी वो कोई बोल रहा था build up, you know, what do you think, Stark versus Kohli? अरे भाई साहब, Stark has not played in IPL for how many years? 7 years? Yeah. 9 years. Yeah. तो कहाँ की rivalry है? किस चीज की rivalry है? वैसे you know, RCB को वो आइडिया बहुत पसंद है ऑफ राइवलरी. ये है राइवलरी. ये है राइवलरी. हाँ, ठीक है. आई टेक ऑल माय वर्ड्स बैक. यस, दिस इज राइवलरी. मैं एक टाइमलाइन समझा देता हूँ व्यूअर्स को अपने, उसके बाद हम इस राइवलरी की बात करेंगे. सो इन 2013 इट वाज एन इवनिंग ऑफ अल्टरकेशंस. पहले मोइसेस ऑनरिक्स और गंभीर के बीच में एक अल्टरकेशन हुआ जहां गंभीर एक सिंगल भाग रहे थे. उसके बाद एक जब आरसीबी बैटिंग कर रही थी, विराट कोहली आउट हुए, एक बहुत प्यारा सा गंभीर ने सेंड ऑफ दिया विराट कोहली को, जिसको छुड़ाने के लिए एक और दिल्ली बॉय को बीच में आना पड़ा, रजत भाटिया, जो केकेआर के लिए खेल रहे थे. उसके बाद लास्ट ईयर एलएसजी में जब गौतम गंभीर थे, तब एक बहुत प्यारी सी चिट चैट हुई थी दोनों के बीच में. तो ये राइवलरीज की बातें करते हैं हम लोग. श्रीनी, नाउ यू कैन गो अहेड. हाँ, ये तो है राइवलरी. इसको कहते हैं लाइक यू नो, दो दिल्ली के लाइक प्रॉपर गुंडे लाइक यू नो लड़ पड़ेंगे आज फिर से. So this is rivalry and ठीक है. Other than that, you know, I वो क्या मुझे वो build up, I'm sure, you know, every game in IPL needs a build up of its kind, but you know, forget rivalry. I'm expecting KKR. Like, for me, there's only one thing: what does Stark bring to the table, and can Russell continue with that fine form? Those two things change everything. You know, so if KKR want to continue those two elements, you know, kind of bring everything to the table. And yeah, I mean, that was an interesting picture. I really want to know what Chandrakant Pandit is bringing to the squad. I'm sure we'll talk about it as this conversation goes further. A lot of controversial statements coming out from a lot of corners, so that will be an interesting phase. Yeah, but Jamie, मैं वापस उसी गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली चैप्टर पे जाना चाहूंगा. ब्रॉडकास्टिंग, जो ब्रॉडकास्ट अभी हो रहा था, वहां पे रवि शास्त्री ने बहुत अच्छे वे में उसको पुट अप किया कि यू नो, व्हेन विराट विल प्ले अ स्ट्रोक, ही विल बी लुकिंग एट दैट डग आउट, या वो फील्डिंग कर रहे होंगे पॉइंट पे, तब वो उस डग आउट को देखेंगे, और वाइस वर्सा भी होगा. कुछ भी होगा तो गौतम गंभीर शायद आरसीबी की तरफ देखेंगे. वो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट तो आ जाती है यार कि यू नो, जब इट्स जीजी वर्सेस वीके, तो एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो रहता है एज एन स्पेक्टेटर, एज अ क्रिकेट फैन. No, बिल्कुल. I think this is one aspect of the IPL where, unlike international cricket, majority of people, I would assume majority, will be like, हाँ ये ठीक है, because it's franchise cricket, it's entertainment, it's a slightly different, it's a more fun model, you know, than
than international cricket. I think 13 में Chinnaswamy में दोनों के बीच कुछ हुआ था. One guy was walking between wickets and Gambhir said something. Then 16 at Eden Gardens, Virat Kohli's team won. He was man of the match. Ball फेंका गया था. And then we saw last season Avesh Khan last ball win helmet. Gambhir ने ये किया था Chinnaswamy को और फिर लखनऊ के अंदर all that drama. I think that pretty much is the rivalry. I think it's been a decade since RCB managed to beat KKR at Chinnaswamy. If that stat is true, I saw it on Twitter or X. If that stat is true, फिर तो भाई कोई rivalry नहीं है. So again, I mean, like Srini was saying, oftentimes we struggle to come up with angles and subplots and all these things. अगर हम गंभीर और कोहली के बारे में सिर्फ वही बात कर रहे हैं, it just says what a one-sided rivalry it actually is. Yeah. Okay, can I have that quote graphic again? That Gambhir quote graphic again? Yeah. Taus bhai, first of all, welcome to Cricket Next. Or one team which I wanted to beat every time and probably in my dreams was RCB. One thing I would love to have again is go on the cricket field and beat RCB again. Gautam Gambhir says this. Is it because of Virat Kohli? Exactly. Good question. Yeah, beautiful. I mean, I love these two guys, these two characters. See, आरसीबी में बहुत मतलब आपको वो कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे जो आपको केकेआर में मिलेंगे. गौतम गंभीर है, फिर बाद में सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, फिर एक वरुण चक्रवर्ती. यहाँ पर आपको विराट कोहली मिलेंगे. विराट को बाकी सब सीधा सीधा साइड है. The beauty of these two contest rivals. I mean, एक तो अभी मेंटर हो गया, पहले प्लेयर था, और वो एक फैक्टर रहता है ना, गंभीर इतना सीनियर प्लेयर somebody, और ये नीचे से आके लड़का फिर आगे उसको सुपर सीड कर जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, एंड देन गंभीर सीजन. वो एक टिपिकल होता है ना ह्यूमन कैरेक्टर, यार ये लड़का कल का आया हुआ लड़का और मुझसे आगे निकल गया, समथिंग ऑन दोज लाइंस. तो वो एक फन फैक्टर लेके आ जाता है डेफिनेटली मैच में. देखिए ईगो तो असाइड रखना चाहिए क्रिकेट में, मगर अगर ये बड़े प्लेयर्स का ईगो आ जाता है तो एक पॉट बॉयलर हो जाता है. और केकेआर मतलब KKR two successful seasons they have had. They have won 2 trophies, while RCB, despite having some of the best players in their lineup, नहीं जीत पाए. तो वो एक खोखलापन रहेगा विराट कोहली में, वो खुन्नस तो रहेगी हमेशा. यार हमारे पास इतनी बेस्ट टीम होने के बाद हम सारा वो नहीं कर पाए. गौतम गंभीर despite like not having that balance, वो जाके जीत के आ गए. तो अब क्या मतलब दोनों के पास कुछ ना कुछ है. विराट के पास गंभीर के पास उनके पास IPL टाइटल है, दो विराट के पास सिर्फ रन है और कुछ नहीं है, सिर्फ स्टैट्स है और कुछ नहीं. So that way makes a great story, makes a great entertaining fight. और I feel, I mean, these guys will be again at it again. वो दिखाएंगे नहीं, मगर वो साइकोलॉजिकली रहेंगे, यार मुझे तो इसको हराना है. बंदे को दिल में वो कोने में छुपा रहेगा, वो कोने में किधर, यार जीतना है, गंभीर को हराना है और मुझे कोहली को हराना है. दोनों को एक दूसरे को नीचा दिखाना है ये मैच में. ऑन द फील्ड एब्सोल्युटली बाहर तो नहीं होना चाहिए ऐसा, but on the field एक दूसरे को तो. So that is the beauty of this contest. That is the beauty. Apart from the big three, the Virat Kohli, the Virat, Faf, and Maxwell. You have Sunil Narine, and then you have an Andre Russell to take on the bowling attack, and then Mitchell Stark taking on Virat Kohli. What a beautiful contest. इससे better contest मुझे लगता नहीं है अभी के दिन मिलेगा. But personal rivalries and as well as team तो नहीं कहेंगे, but personal rivalries आपको देखने में ज्यादा मजा आएगा. Yeah, I'm all for. Okay. This is Shri, this was about entertain. Yeah. Go ahead. You can. Continue. It's a strange contradiction, both these teams. The more I think about this, like it is Kolkata Knight Riders whose off-field distraction or off-field the noise that they make should be louder than what they do on the field, because their franchise is more about Bollywood and Shah Rukh Khan and movies and all of those. Whereas with RCB, it should be more about cricket as a focus, business, and because again, I mean, the priorities that Diageo as a franchise owner brings to the table. वो एक normally like kind of what RCB have managed to do is look at the noise that they have created off the field. They are good at everything. The content that they make, the podcast that they do, and the fan engagement that they have. I don't think any franchise does as much as RCB does, except for the cricket. And KKR is where Shah Rukh Khan is seen making that statement.
it's all about the boys. It's all about the cricket, and I don't want to be anywhere close to the team. And he makes a conscious effort to stay away from the media, not talk about KKR, make this about cricket. Over the last 10 years, SRK has very consciously tried to stay in the shadows. So वो एक बड़ा contradiction है दोनों में, in terms of what RCB and KKR bring to the table, which is obviously very interesting. It wasn't like this when the tournament began, because when the tournament began, you had the Anil Kumble's of the world, you had some very senior guys, who were backing RCB to play good cricket. Unfortunately, things never went for them that the way they would have liked. Initial years of the IPL, when it started, it was so much about Shah Rukh Khan for Kolkata Knight Riders, and of the first 3 years, and that's why they even struggled on the field. Look how narratives changed. Yeah. That's another interesting way of looking at it. True. But Jimmy, this is all about, off the field things and rivalries off the field, because वो ठीक है, लड़ाई जो भी आर्गुमेंट होता है वो ऑन फील्ड होता है, बट दैट गोज टू सोशल मीडिया और वहां से वो हाइप क्रिएट हो जाता है. टॉकिंग अबाउट द analysis of this particular game or this team, I would start with Mitchell Starc. Do you think Mitchell Starc making a cut into the 11 is because of the price tag he has? That's the obligation now KKR are having. Absolutely. I mean, it still makes me scratch my head and wonder कि जिस इंसान ने 9 साल से IPL नहीं खेला, आपने उस पे 24.5 करोड़ खर्चे. I mean, what in Mitchell Starc's history, with all due respect, has led you to believe that he would be a potent strike force in the IPL? He's never had a really solid IPL season. और फिर 8 साल हो गए. And you said 24. So again, I mean, I have zero business sense. I'm sure Venki Mysore and all the stakeholders at Red Chillies and all these people saw something there. But I think anyone can tell you that whatever they saw, it did not justify 24.5. I mean, should we be surprised that Mitchell Starc went for 56? I'm not. He's a fantastic. He's arguably, well, he is Australia's best ever left-arm pacer in one-day cricket. He's a fantastic test bowler. T20 आंकड़े इतने अच्छे नहीं है जितना कि बंदे के टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में है. यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं वनडे फॉर्मेट में. T20 में बहुत समय हो गया. And I know he had a decent role when Australia won the T20 World Cup in the Middle East 3 years ago. But this is a player. I mean, 9 years he's not bowled a ball in the IPL, and you're spending nearly 25 crores on him. I was the last person to be surprised that he went for 56. In that match. Dobara nahi hoga. He will have good days. He'll have some average days. He might have the odd bad day. I don't see him going wicketless for 56. एक ओवर में 25 आए. ये हमेशा नहीं होगा. But boss, 24.5 crores. Beyond my logic. और जाहिर सी बात है, आपने पैसे खर्च किए, 7-8 मैच तो खिलाओगे ना. But make no mistake, I don't see Mitchell Starc playing 14 matches. Yeah. Agree to that. But Taus bhai, यहाँ पे क्या can we look up towards a matchup, Mitchell Starc versus Virat Kohli, just because the kind of problems that Indian batters and not just Virat Kohli have against the left arm pacers and of that quality. He went for 56, but he's a quality bowler. Absolutely, yeah. He's coming back after 9 years. Yeah, he's got like 20. He's been overpriced. He's got at a very unnecessary tag जो 24 crores का है वो जबरदस्ती गया. He could have been bought, but बाकी टीम उसको चाहिए थी, so there must be a reason. But I would say like that was first game. Let him adopt. 9 years के बाद आया, but he's still a champion bowler. Somebody is done who knows the white ball cricket, how it goes about. Like T20 is different ball game, but टाइम भी नहीं उतना आपके पास. मगर यहाँ पर मौका है. लाइक पहली गेम में 56 दिया, सेकेंड इनिंग अब ग्रेजुअली वो आई थिंक बेटर होता जाएगा. यू विल हैव टू लर्न अ लॉट. मतलब आप देखिए क्रिकेट में आप खत्म नहीं कर सकते यार. यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग. तो अगर स्मार्ट बंदा है, he should know that this is a different ball game altogether. Playing in India is different. Bowling in these conditions are different. You have to mix up with those slower ones, cutters and those yorkers. तो आप एक एंगल लेके डालेंगे, एक पेस लेके डालेंगे तो वो चलता नहीं है. तो अगर ये स्मार्ट है बंदे तो ये रियलाइज अभी कर लिए होंगे पिछले मैच के बाद, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. उसके बाद राइवलरी की अगर बात करें, विराट कोहली और मिचेल स्टार्क, डेफिनेटली यार व्हाट अ राइवलरी इज गोइंग टू बी. क्योंकि मोहम्मद आमिर किसको याद है, शाहीन अफरीदी किसको याद है, जो विराट कोहली को आराम से
leg before plumb करते थे. It's been a problem. It's been a problem for Virat Kohli. But यार ये बंदा it's going to be a good contest. But ये बंदा कैसे fight back करेगा? He will know more than a thing about कि यार ये बंदे को across नहीं जाना है, इसको सीधा खेलना है. थोड़ा रिस्पेक्ट देना है इनिशियल स्टेज में. बस एक बार एक दो ओवर चला गया, एटलीस्ट 3-4 बॉल चले गए, देन ही कैन गो आफ्टर हिम. क्योंकि मिचेल स्टार्क अभी भी वो कॉन्फिडेंस तो डेंट हुआ रहेगा लास्ट मैच से कि यार 56 खा लिया 24 करोड़ लेने के बाद, तो वो एक फैक्टर तो रहेगा. सो दैट फैक्टर विराट कोहली माइट टेक एडवांटेज ऑफ इट. क्योंकि यार वो कैरी करना बहुत ज्यादा बर्डन होता है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है यार 24 करोड़ लिया. तो विराट कोहली विल लुक टू टारगेट दैट 24 करोड़ rather than going after यार लेफ्ट आर्म पेसर है, बॉल अंदर लेके आएगा. आई थिंक अगर वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया अटैक करना, तो मिचेल स्टार्क का कॉन्फिडेंस चल जाएगा, डाउन हो जाएगा कंप्लीटली. बट देन इट्स गोइंग टू बी अ फन कॉन्टेस्ट यार. इससे बेटर नहीं है, मजा नहीं आएगा. Okay. So KKR, Shrini, KKR have won the toss and they're bowling first. If I can just have the playing 11, playing 11 for RCB. Yeah, I mean, playing 11 for RCB. So yeah. Go ahead. So, no, I mean, for me right now, that I was making light of it, but yeah, that is one of the contests to look at how Virat faces Star. I just when Taus was speaking, there was something in my mind. I'll just quickly share it about Mitchell Stark's salary. 24 crore doesn't make any sense at all. But understand, and that's the way I think it is. Salary does not and will not, going into the future, determine the potential of a cricketer. Salary, what like you and me as employees, as professionals, the salary that we draw has nothing to do necessarily with the output we can potentially bring to the table. Right? A salary is more a reward for what we have potentially delivered, what we have delivered in the past. So what Mitchell Stark has been given, whether it makes sense or not, to me it does not make sense, as I completely go with what Jamie also said. But then the money is also a reward to the kind of aura that he carries as a white ball bowler, single-handedly winning matches for Australia. So I think that you need to look at it from that perspective. Having said that, I really look forward to seeing what Mitchell Stark will bring to the table, because I hope so that in Kolkata Knight Riders camp, whoever took that decision to spend 24 crore on Mitchell Stark is either rewarded if this clicks, or is made answerable if it does not click. I hope that kind of answerability is there in the camp. And having said that, one-on-one, if I'm looking at this squad, I'm just looking at Andre Russell as the only difference between the two teams. If Russell can continue to be in the same kind of form, I mean, Klaassen, first match, brought his team almost close, but did not happen. Second game, again lifted the momentum, and see what SRH did. Same way, I'm looking at this game. Gray Russell is the only difference, is a solid difference. If he can continue to be in the kind of form, then RCB has no chance. Yeah, but Jimmy, do you think he can continue with that kind of a form? Because he has एक कहीं ना कहीं वो एक लेगेसी के साथ आते हैं कि जिस तरीके से वो पिछले मैच में खेले, बट कंसिस्टेंसी इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स और सो वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही है, वो डिलीवरेबल कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है. तो और एक चीज होती है ना कि आपने ये काम एक मैच में कर दिया, लाइक यू कुड हैव डन इट इन द लेटर स्टेज ऑफ द गेम, वो पहले ही हो गया. कहीं ना कहीं वो शायद कंसिस्टेंसी पे बात आएगी आज. एब्सोल्युटली. मुझे याद नहीं है कि कब आंड्रे रसल ने एक बहुत ही एक कंसिस्टेंट सीजन दिया. बट अगेन आई मीन हम बहुत ये बात डिस्कस कर चुके हैं केकेआर के बारे में कि इफ यू आर स्टिल dependent on Andre Russell and Sunil Narine, despite the massive success they've had across the world. मतलब Russell and Pollard खास करके, they are probably the two most successful T20 players of all time. When you look at the titles they won, the trophy, ये जहां भी जाते हैं इनकी टीमें अक्सर titles जीतते हैं.
I don't remember when Andre Russell began so strongly. It was fantastic to see him. यार 2 ओवर में 2 विकेट लिए 25 रन दिए, लेकिन आंद्रे रसल कब कम रन देते हैं, then to just come out and bat that way, 6-7 sixes, outstanding. But like you just mentioned, there is that law of averages. अगर वो शुरुआत में ऐसे कर रहे हैं, again it's one match, but again right now I'm guessing Russell is 34 35 top of my head, injury prone. अगर 14 मैच खेलते हैं, I think KKR, He's the 35. same He's team, 35. he's 35, but given his dodgy knees and back, he's probably 38. But he's supremely fit. The guy can hit the ball farther than anyone right now. I think, without having any inside knowledge, KKR probably इस बात से खुश होगी अगर 14 में से बंदा 5 मैच में चल जाए, क्योंकि वो 5 ऐसे मैच होंगे ना कि भाई सबके होश उड़ जाएंगे. But the counter argument is, do you want to form your team around someone who's 35 and only clicks as an all-rounder in only 5 or 14 matches? Debatable, but clearly KKR see a lot of value in what he does. अगर आज वो ऐसे ऐसे करेंगे जैसे लास्ट मैच में किया and they go up 2-0, KKR won't give a damn what we on the outside say about Russell and their tactics. But here's the point, Taus bhai, जो जेमी ने बोला कि KKR might be happy with him, clicking in 5 games. Considering that they have the mega auction next time, is edition में they can afford that? Yeah, you're talking about the Mitchell Stark. No, I'm talking Yeah, about Andrew definitely. Russell, yeah. Andre Russell, yeah. Sorry, Mitchell Stark. नहीं हाँ, आंद्रे रसेल big player man, big player. यहाँ पर 5 matches are enough. 5 matches, I would be, it would be harsh to expect him to perform in like more than 5-6 games, 7 games, because you have other players also, because it's a team game. तो आप अगर 5 के ऊपर minimum तो 5, क्योंकि he's got to be a big, one of the attractions when it comes to the mega auction. और जिस तरह से उन्होंने last match खेला है, तो एटलीस्ट पता चला है कि यार ये बंदे में दम है. बिकॉज इफ यू लुक एट द लास्ट सीजन, ही वाज स्ट्रगलिंग अ बिट विद रन्स, नॉट विद बैट, बट विद रन्स ही वाज स्ट्रगलिंग. ही वाज लुकिंग गुड, ही वाज हिटिंग दोस सिक्सर, बट वो जो कंसिस्टेंसी है वो अगर ये सीजन में मेंटेन करे ना, तो आंद्रे रसेल, केकेआर हैज अ गुड चांस टू मेक इट टू द नेक्स्ट स्टेज. बिकॉज आई मीन इफ यू लुक एट द होल न्यूक्लियस ऑफ द साइड, इनके पास सिर्फ एक बड़ा प्लेयर है, बिग फैक्टर है, जो श्रीने भाई ने भी बोला कि Andre Russell makes difference when it comes to not just RCB, other teams as well. This guy has the ability to change the game. अगर वैसे ही ग्लेन मैक्सवेल भी करे, he's also the same. तो ग्लेन मैक्सवेल मगर वो नहीं आते, इतना कंसिस्टेंसी नहीं आती जो रसेल के पास आती है. तो रसेल इज वन बिग फैक्टर. और ये सीरीज में, मतलब ये आईपीएल में, if he goes with that like 5, 6, 7 games, if he clicks, तो यार नेक्स्ट स्टेज तो है ही. फिर उसके बाद मेगा ऑक्शन में KKR will have a, I mean, they will definitely try to retain him. He could be one of the reasons, because I'm not expecting them to retain a Shreyas Iyer or maybe except a few names, Andre Russell, Sunil Narine. That's it. उसके बाद आपको बाकी तो fetch करेंगे, because still they have not been able to form a good squad. Then comes the playing 11. I'm still not convinced with the playing 11 except those Andre Russells and the Sunil Narine. तो यार 5-6 गेम्स हियर एंड देयर, 1-2 मैचेस में या बीच में दो फेस तो आएगा यार, बिकॉज इट्स आईपीएल यार, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट. तो ड्राई फेस तो देखने मिलेगा ही रसल से एंड अदर प्लेयर्स एज वेल. तो यहाँ पर थोड़ा लीवे मिलेगा, बट आंद्रे रसेल इज अ सुपरस्टार मैन. ही कैन चेंज द गेम एंड इससे बेटर मैच विनर मुझे लगता नहीं यार. True. No, as we are talking about the rivalries, एक rivalry हम भूल गए, that is Ranku Singh versus Yash Dayal. Yash Dayal is now a part of the RCB camp. But live action start होने जा रहा है. Srini, Taus bhai, Jamie, quickly your predictions for this game and RCB कितना post करने वाला है? Srini, I'll start with you. अगर घर पे खेल रहा है आरसीबी चैंपियन है बॉस, घर पे. I will stick with RCB. That's why I said Andre Russell. He's the only thing, and the one bit I will want to watch is that Stark versus Kohli. Why? Because quality bowler versus a quality batter. That's the only reason I get that kick. Having said that, purely on paper, what I find favorites, as I said, RCB. They know their home conditions. They know what to do, what not to do.
they know it best, unless a guy like Ray Russell comes and plays a mad innings and spoils it for them. Okay. Jamie. Well, I read somewhere that it's been 9 or 10 years since RCB have managed to beat KKR at home. So I'm going to discard whatever home record Srini is talking about, and KKR to win rather easily, because RCB is the one team where actually the stats say that they have no home record. So KKR all the way for me. Okay. That was why you need to be the tiebreaker now. KKR, no, KKR. It's for me, it's KKR because they have like balance compared to इनका bowling नहीं है. Problem ये है. See, these guys don't have a proper bowling lineup. RCB is one factor which might affect them throughout this IPL. तो एक फैक्टर कर्ण शर्मा से आप जीतेंगे क्या? कर्ण शर्मा से आप नहीं जीतेंगे. बाकी कौन है फास्ट बॉलर्स? I'm not convinced. So, but I'm looking at the Andre Russell thing here. Yash Dayal and Rinku Singh. That contest, and especially क्योंकि KKR चेस करेगा ना, तो वो और मजेदार हो जाएगा contest. वो डिप्रेशन में चला गया था बेचारा यश दयाल. And that was because of social media. वो खुद बोला कि मेरे को मना किया गया था सोशल मीडिया नहीं देखना, मैंने सोशल मीडिया ही देखा सबसे पहले जाकर 5 छक्के खाने. And he's not a bad bowler यार, he's a good bowler. No, but he's come back very well. पिछले मैच में बंदे ने 4 ओवर में 23 रन दिए, 1 विकेट लिया. चिन्नास्वामी में अगर आप उस पेस से सिर्फ 23 रन दे रहे हो 4 ओवर में, that's a massive. That's like taking 3 for 30 at some other ground. So hats off to him for coming back here. True. यश दयाल और रिंकू सिंह, तो मेरठ का है रिंकू सिंह, बोथ आर फ्रॉम यूपी. मेरठ का रिंकू सिंह है, यश दयाल कम्स फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद. तो मैं यश दयाल बिकॉज़ आई कम फ्रॉम द सेम प्लेस. Okay. So Srini is saying RCB, Jamie bhai and Taus bhai you saying KKR. मेरे अंदर का RCB फैन जाग चुका है, मैं RCB बोलूंगा. Yeah Srini. I'll share a secret which Okay. like, so for me, I mean I am like, rarely am I really fond of cricketers so much, but for me that one special this thing rests with Faf du Plessis. वो जिस स्क्वाड में है, मैं हमेशा फाफ के साथ जाऊंगा. I am in awe of that guy. I really admire that man. I really am, I don't want to use the word, but I really like the guy. Like I really like. So that Okay. probably tells my this thing. Okay. So the fanboy is also coming out, huh? I like Faf. I really like. He's cool. He's like, IPL में fan Yeah, boy he's होना like क्या cool, पता he's है? cool. It's good ना. मैं here it's not India or हाँ. fan boy True. should be allowed here. I really like True. Faf. The personality the charm that he exudes as a personality, like as an True. individual. Very cool. True. चलिए, the live action has begun, so we'll go there and watch it. Thank you so much, gentlemen, for joining me this one. मैच के बाद मिलेंगे और बात करेंगे इसके बारे में. Thank you so much. Bye, good night. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.